Okay, good morning students. Welcome to another lecture of learning R. So today is day 8 and today we will be learning about a tool that is frequently used in R for data sharing and for data analysis and for data presentation. So it is basically a tool which is an inbuilt package in R which helps in better data visualization and data sharing. Like suppose you are working two or three teams and if you are working आपके पास कोई एक particular मॉड्यूल है किसी प्रोजेक्ट के करने के लिए and the certain some other modules are being handled by different teams in different locations, and at the end then you have to combine the code of all the three teams and then you have to analyze the data. So this tool helps you in sending over the data and sending over your code to the different teams and जैसे आपने अपने कोड के यूज़ करके कुछ डेटा जनरेट किया होगा, that data can also be transferred into the different formats like in PDF or in PPTs or in Excel. So there are different formats which your analysis can be sent to different teams. So it is beneficial for when you are working in different teams. So आप अपने मॉड्यूल का डेटा एनालिसिस करके you can then send over to the second team and then the same you can also send the code, so the second team can have a look at it, that what your code does and can suggest any changes, and also they can look at the final results that how your data is looking like this जो डेटा आप इसमें जनरेट होता है it is kind of a data जैसे कोविड के टाइम पे एक फ्लो चार्ट बन के आता था कि कौन सी कंट्रीज़ में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं. इट वाज अ लाइव ट्रैकिंग काइंड ऑफ अ डेटा कि जैसे यूएस में नंबर बढ़ते रहते थे और इंडिया में कम हो गए हैं या पाकिस्तान में कम हो गए हैं या इन यूके में कम हो गए, तो इट वाज अ लाइव डेटा कि आपका जो डेटा है वो इट इज़ गेटिंग फीड इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम एंड वहाँ से हेल्थ केयर सिस्टम से यू आर गेटिंग द लाइव डेटा ऑफ बार चार्ट कि जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वो बार ग्राफ बढ़ता जाता था और जिसमें कम हो रहा है तो वो लाइकवाइज उसमें कम होता जाता था. ओके, सो जो टूल का नाम है और जो पैकेज का नाम है दैट द पैकेज इज नोन एज योर R Markdown. So what it does is it is a package that helps us create dynamic analysis documents that combine code, rendered output जो आपका फिगर है and kind of a summary कि आपका whatever is happening in your complete document. Okay, so this is the basic layout or idea what the R Markdown does. और जिनकी official website है you can download the package from this official website, or no need to do that also because here also they have given a command to install. मैं आपको दिखाऊँ कैसे install करना है आपको ये वाला package. Okay, so what it does on its website, क्या कह रहा है website पे, R Markdown provides an authoring framework for data science. You can use a single R Markdown file to both save and execute code, generate high quality reports that can be shared with an audience. So R Markdown documents are fully reproducible and support dozens of static and dynamic output formats. ओके, सो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है दे आर फुल्ली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब कि जो आपका कोड इधर काम कर रहा है एक साइट पे काम कर रहा है वो दैट शुड वर्क ऑन द सेकंड साइट आल्सो इफ़ यू आर यूजिंग द सेम R Markdown वर्जन. ऑलराइट, सो अभी हम देखते हैं कि हाउ इट कैन बी इंस्टॉल्ड. जहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया है इन्होंने. सो इंस्टॉलेशन के लिए लाइक द रेस्ट ऑफ द R Markdown इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स. यू कैन इंस्टॉल R Markdown पैकेज फ्रॉम CRAN विद, ये आपका एक कमांड दिया हुआ है जिसको आपने जिससे आप यू कैन इंस्टॉल द इंस्टॉल डॉट पैकेजेस एट R Markdown. सो R Markdown इंस्टॉल करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है ये दिस इज द कमांड इंस्टॉल डॉट पैकेजेस एंड R Markdown. और उसको जब हम रन करते हैं, मैंने पहले एक बार रन कर चुका हूँ, सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो इट विल अपडेट इफ़ देयर इज़ एनी अपडेट अवेलेबल ऑन द सर्वर. सो नाउ इट इज़ अपडेटिंग. तभी आपको इतना ज़्यादा नहीं चल पाएगा, इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं आपको दिखेंगी इंस्टॉल होने टाइम पे जो यहाँ पे आपको दिखेंगी अगर मैं इसके थोड़ी सी पहले के लेके जाऊँ. दिस इज़ द डिटेल्स. यहाँ पे मैंने इसको पहली बार चलाया था, ये यहाँ से मैंने पहली बार चलाया था. तो दिस आर ऑल द डिटेल्स जो आपको इंस्टॉल करने टाइम पे जिस नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करते हैं, इट शो यू सम फाइल. ये आपका सारा डेटा जो था, these are successfully installed, successfully unpacked. So now अब भी मैं इसको जब चलाता हूँ तो it only updates the current package which is already installed in the R. Okay, so it is installed the download binary packages in user Shweta app data local temp. This is the complete directory of your, this is the directory where it is installed, where it has installed your R package. ओके, सो आज का सिर्फ वीडियो इसीलिए था कि वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस R Markdown. इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल बी शेयरिंग द ट्यूटोरियल्स फॉर R Markdown कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे. सो कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.